Good morning students, welcome to Commerce Canpit Odisha. Today we'll start with the first chapter of auditing. ठीक अछि? It's basic concepts of auditing, that is chapter number 1. एथिरे में देखिए nature, scope, objectives and significance of auditing. Okay? ए जिनस गुड़ाको most of you all are from BCom background. तो केबे ना केबे तो देखिचो. Okay? You would have studied it और पढ़िबो in future terms. तो audit विषय भी जानिचो. तो दिस विल बी एन एलाबोरेटिव वन. तमे जो भाबुचो कोन एटा बहुत एलाबोरेटिव टर्म्स रे थिबो कहि. बट व्हाट वी आर स्टडीइंग इट इज फ्रॉम सीएमए पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, तो फर्स्ट देखो ऑडिट रो मीनिंग कोन. व्हाट इज एन ऑडिट? एनीवन कैन एक्सप्लेन इन लाइक लेमैन टर्म्स? Inspection of accounts of a company. Okay, somewhat fine. Then verification and examination. Okay, fine, great. So tamane jaha kahilo, everything is a part of auditing. Okay, but they are of different steps. So one major point I have to add here is it's an independent examination or independent verification. The word independent is very important in auditing. जहाँ भी examine करचो, जहाँ भी verify करचो, सब जगह कौन in independent terms. Okay. तो देखो independent examination of financial information of an entity, whether profit oriented or not, and irrespective of its size, legal form, and when such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon. तो ऑडिट रे में जहां भी पढुछु each individual जो पैरा मु देई थाउची, this has 3 key points. मु कहि दोची तमाने घर जाई सेडा लाइक ग्राउंड वर्क टा केमते करबो. I will teach you that and सेडा तमे निजे निजे करियर अछि, so that you will be remembering it simultaneously. Okay, तो मोर जो पैराग्राफ टा अछि, we have 3 things here. First रयो तमरो meaning. Okay, तापर रयो objective, तापर रयो तमरो purpose. Okay, we have 3 things in this small paragraph. First, meaning kon amaro, it's an independent examination of what? Which type of information? Financial information only, not cost information or not IT information or not technological information. So financial information ro independent examination. So independent examination mane kono? The examination is carried out by someone who is not at all related to the organization. बुझी पालो? तो इमिति लोक जेतोळ को ऑर्गेनाइजेशन को जे रिलेटेड बिल्कुल भी नाही, सीए जेतोळ एग्जामिन करची, तो सेडर मेन बेनिफिट कोन हबो? द बेनिफिट विल बी कोन बोले? हां, समवट. तो से कोन जहां भी दबो सेडा गुटे प्योर डिसीजन रहबो, व्हिच इज द मेन की ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग. तो एडा रहला हमर मीनिंग, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस रो मध्य कोन ऑडिटिंग हबो. So this was a 2012 bit question. I am coming to that. से MCQ question रे कौन होची सेथरे से पचार थिला, audit is carried out for dash type of organizations. हैला, तो खाली profit oriented organizations पिला ने लिखि दे चंदी, but it's both profit and non profit. Okay, तो ए पॉइंट हम सेथे पे ऐड करथिले. Profit oriented or not and irrespective of its size or legal form. Small companies रो दरकार नहीं, खाली large companies रो दरकार अछि, एमती किछि भी नहीं. Every type of organization needs a complete audit. ठीक अछि? When such an examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon. So this is the purpose or objective. Okay? Objective जहाँ भी अच्छी आमरो रहियो सेडा pure result. माने जो रिजल्ट पूरा अनबायस्ड, किछि भी बायस न करी कि जो रिजल्ट प्रोड्यूस करियर अछि, से रिजल्ट पे हमें कैरी आउट करछु इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन. बट जो हमर पर्पस होची कोन, विद एन व्यू टू एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन देयरऑन. तमे जानचो इन द लेटर टॉपिक तमे पढिबो ऑडिट रो इंपोर्टेंस कोन. बट ऑडिट रो मेजर इंपोर्टेंस होची गुटे कंपनी रे जतळे को ऑडिट रिपोर्ट पडा आसुची, द शेयर होल्डर्स आर मोर रिलायबल टुवर्ड्स द कंपनी. बुझी पालो, तंगे बहुत रिलायबल हे जानती. Because कौन पे? The only reason is the audit produces independent results. Okay, तो एडा रहला हमर मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस. तमे जतोळ को लेखुचो मु गुटे जिंस खाली देखे दोची, ओनली वन थिंग. तो एमिति जतोळ को हेडिंग देला तमे ऑडिट तळे, you can either classify into 3 parts. माने तमे एमिति लेखि दे पारिबो मीनिंग, objective and purpose.
ओके एंड रिमेंबर तुम जहाँ भी नोट्स लिखुच दिस इज फॉर द पर्पस ऑफ एमसीक्यूज एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव एमती नहीं कि खाली डिस्क्रिप्टिव पाई वी आल्सो हैव एमसीक्यू क्वेश्चंस इन दिस कहीं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कौन सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव कौन सेटा मध्य से पचारछि बिकॉज ऑब्जेक्टिव कौन तुम जानिछ बट को ऑब्जेक्टिव को अंडर रे क्लासिफाई होछि सेटा तुम जानि पारिबोनी ओके तो देखो मीनिंग रे वी हैव इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सेटा बट ऑब्जेक्टिव रे कौन वी हैव प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कौन हमरो to express an opinion via audit report whether financial statements show a true and fair view of state of affairs and profit and loss account बुझी पारला तो से कौन कोची बैलेंस शीट वर्ड टा से यूज करनी से कौन वर्ड टा यूज करला एडा स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द की मोस्ट थिंग सेकंड इंपोर्टेंट थिंग मु कहया चाहूची ऑडिट इमति नै कि तमने किछ बुझी पारियोनी करके बाकी मन रखि पारिबन कौन पई बिकॉज़ यू हैव अ लॉट ऑफ कीवर्ड्स जो कीवर्ड टा जोडी लिखिबार अछि सेडा अगर लिखिले मार्क्स मिलेबो ओके तो मीनिंग अंडर हमर आसला कोन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सेतिकी ऑब्जेक्टिव अंडर रे कोन आसला प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्राइमरी तोळे आसला हमर कोन एक्सप्रेसिंग ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस इमति तोळे तोळे करिके लिखिबो चार्ट फॉर्मेट रे देन सेकेंडरी रे कोन आसीबो prevention and detection of fraud and errors during the course of audit एडा रहला हमर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव so we have covered one descriptive questions and 3 MCQ questions along with this okay मु गोटे पैरा को एते एलाबोरेट करिके कहूची फ्यूचर रे एमते रहिबोनी just because तुम गोटे आइडिया लागियार अछि कि केमते तमरो नोट्स रहिबो अप्रोच टा केमते रहिबो okay coming to the concepts and definition of auditing the concept of auditing royala amaro systematic process of examining financial and non financial information एडी कोन आसिला financial and non financial information to ensure number 1 accuracy number 2 compliance number 3 reliability accuracy compliance and reliability it involves assessing internal controls verifying records and evaluating organizational practices to provide an independent opinion so all these are done only to get an independent opinion बाकी जहाँ भी से कहला सेटा होची कोन हमरा सिस्टमैटिक प्रोसेस ता अंडर रे आछि फर्स्ट पॉइंट फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रो डिटेल एग्जामिनेशन देन आछि कोन से जिंसडा हम एमिति करबा जेंति कि हम तीनटा जिंस कंफर्म करियर अछि दीस आर द मोस्ट इंपोर्टेंट कीवर्ड्स कहि दउथि त माने ये करबो यू विल बी गेटिंग द मटेरियल वेरी सून सेथिरे तमे मार्कअप भी कर दे पारियो एक्यूरेसी कंप्लायंस एज वेल एज रिलायबिलिटी एक्यूरेसी माने कोन फ्री from errors and mistakes then compliance mane they'll be complying with different law and regulations reliability mane kon भरोसा okay trustworthy तो ए तीनटा जिंस से कोन करियर अछि एंश्योर करियर अछि तो ए भितर जो प्रोसीजर ता अछि सेडा कोन थाउची ना फर्स्ट थिंग होची इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ता से एसेस करबो व्हाट इज द एक्चुअल कंट्रोल सिस्टम अ कंपनी इज एडॉप्टिंग फॉर इटसेल्फ ता निज पय से कोन कंट्रोल सिस्टम रखिछि नंबर 1 सेकंड थिंग होची वेरीफाइंग द रिकॉर्ड्स व्हाटएवर रिकॉर्ड्स दे हैव मेंटेन्ड दे हैव टू बी वेरीफाइड देन इवैल्यूएटिंग ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिसेस हैला से प्रैक्टिस जोडा करूछि लाइक व्हाट आर द सिस्टम्स दैट आर बीइंग एडॉप्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशन से जिनसडा से केमिति करछि एंड सेडा मध्ये से वेरीफाई करियो सेथरे मध्ये से जानि दो ओके देन देखो जनरल डेफिनेशन अच्छा तुमको जो डेफिनेशंस ऑफ ऑडिटिंग से पचारिबो you have to make sure what type of definition they are asking in the exam से जनरल डेफिनेशन पचारछि ना स्टैंडर्ड्स हिसाब रे डेफिनेशन पचारछि जनरल डेफिनेशन होची auditing is the independent examination of financial information and systems of an entity to express an opinion on whether the information presents a true and fair view okay तो एथरे कोन तमे डेफिनेशन जेतोड़ को लेखिजो मु गुटे देखौची केमती लेखिवार अछि according to that you have to write and jodi कार किछि problem face होची then they can ask me again I will put a chart of that एडा रहला हमर जनरल
एटा रहला स्टैंडर्ड्स हिसाब रे तो तमे सेटा ध्यान दबो से को जिंस पचारछि इवन इफ इट्स फॉर 2 or 3 मार्क्स तो केमती लिखिबो तमे चार्ट फॉर्मेट रे लिखिला लको इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन ऑफ financial information and systems of entity तो एजा सब कौन पे कैरी आउट होची टू प्रेजेंट true and fair use okay this is the general definition to present true and fair use इमती जेतरो तमे लेखुच मु पक्का कहूचे तुम कोइले कीवर्ड मिस हबनी बुझी पालो तमे डेफिनेशन हिसाब रे पढ़ले पक्का भूल जिवो बिकॉज़ हम ह्यूमन ब्रेन इमती डिजाइन हेची कि हम विजुअल फॉर्मेट ता बेसी दिन जे मन रखि परिबा एंड टेक्स्ट फॉर्मेट ता बहुत जल्दी भूली जिबा ओके दैट्स व्हाई बड़ बड़ कंपनी कोन ग्राफ फॉर्मेट यूज करचनी प्रेजेंटेशन रे हैला स्टैंडर्ड्स हिसाब रे देखो स्टैंडर्ड्स रे आल्सो वी हैव ISA एंड ICAI दीटा टाइप ऑफ स्टैंडर्ड्स अछि एडा मध्ये से बुल्ली की पचार दे परिबो ISA रे कोन an audit is the independent examination of and expression of an opinion on financial statements prepared by management in accordance with the financial reporting standards okay the meaning is same in all perspectives सब perspectives रे meaning same but जेतोळो हमें ए जो अंडरस्कोर भितर एडा जो पळा आसुची तो इमितियार जेतोळो आसुची तो you have to make sure that गुटे भी word एपट सेपटे हबनी because you have to write it exactly that's the meaning there तो standards हिसाब रे जेतोळो से definition पचारची first definition रहला कोन independent examination of and expression of an opinion on financial statements not financial information here it is financial statements prepared by whom na prepared by management in accordance with the financial reporting standards तो हमर स्टैंडर्ड्स बहुत प्रकार अछि we have standards of accounting standards auditing standards cost accounting standards reporting standards सब जग बट को स्टैंडर्ड से कहला ना financial reporting standards एडा खाली मेक श्योर करे अछि in the same format एडी तमे लिखिबो standards रे we have ISA and ICAI okay ISA and ICAI तो आतळे जे तळको लेखुछ तमे केमते लेखिबो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट इमते आर मार्क करके लिखिबो ब्रेक डाउन करके ओके फाइन ICAI कोन कहूची ना ऑडिटिंग इज द इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ से कहले देखो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बट एडी से कहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स of any entity whether profit oriented or not irrespective of its size or legal form when such an examination is conducted to express an opinion thereon so the initial definition ame jo study korthilu seda hochi gote definition given by Institute of Cost Accountants of India okay auditing also includes internal audits operational audits compliance audits performance audits aimed at enhancing organizational governance and efficiency तुमको जदि गोटे बेट क्वेश्चन आसिला कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडिट्स करिवार पर्पस कोन जेतोळ ऑडिट तो ऑडिट बुझी पालो सब जार ऑब्जेक्टिव कोन रहला इंडिपेंडेंट ओपिनियन फॉर्म करियार बट द थिंग हियर इज एते प्रकार ऑडिट कोन पे अछि ना तार आंसर होची एडा वन होची एनहांसिंग ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नेंस माने कोन इन व्हाट वे द मैनेजमेंट इज कैरिड आउट इन अ कंपनी मैनेजमेंट प्रोसीजर ता केमिति अछि मैनेजमेंट ऊपर भी चेक रयर अछि ना सो दैट द एम्प्लॉइज वोंट सफर सेटा होची नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 पॉइंट होची ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी तांकर जदी किछि भूल भाल रय होची कि जदी ड्यूअल वर्क हे होची सेटा प्रिवेंट करियर से सजेशंस मध्ये देबो ऑडिटर इमति ना कि से खाली गाली आगा करियो खाली फाइन आगा करियो कि पेनल्टी आगा पकेबो कि डिस्क्वालिफिकेशन आगा से दबो सेमति किछि नै ही कैन आल्सो मेक यू इंप्रूव योर टर्म्स ओके तो एडा होची कथा तो एते प्रकार ऑडिट अछि एजा सब हमर कोर्स रे अछि वी हैव आल्सो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट एडा रहले तमरा पेट क्वेश्चन रो पॉइंट की एलिमेंट्स इंक्लूड इंडिपेंडेंस एविडेंस बेस्ड एनालिसिस एंड एडहेरेंस टू स्टैंडर्ड्स माने एडा होची
ऑडिटर रो गुटे की एस्पेक्ट्स टू कीप इन माइंड माने गुटे ऑडिटर तार सब ता मुंड रे रहियो कि ए तीनटा जिंस ऑडिट करला बेले से किंदे प्रैक्टिस करिवो नंबर 1 इज इंडिपेंडेंस ऑब्वियसली इंडिपेंडेंस माने कोन he'll not be giving any biased decision जहाँ भी से दोची it's completely pure second thing होची evidence based analysis आसे इमती कहो कि मु बहुत like I meditate a lot I follow a lot of gods and I follow a lot of philosophies तो मते जोड़ा मन को आइला सेटा पूरा ठीक तो मु कहि दी ए कंपनी बहुत बकवास कंपनी डा तो इनदी हबनी they have to have some evidence based analysis and third thing is adherence to standards माने कोन different standards following the standards applicable को standards कोडी applicable एबे देखो ये कोन कहला ये कहितला खाली रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करले हे होछ बट जदि मनर गुडे कॉस्टिंग कंपनी अछि तो दे हैव टू फॉलो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑब्वियसली आ जदि खाली गुटे अकाउंटिंग कंपनी अछि यूएस बेस्ड अकाउंटिंग कंपनी अछि तो दे हैव टू फॉलो आईएफआरएस और आईएफएएस जो स्टैंडर्ड्स तांको एप्लीकेबल से स्टैंडर्ड्स से फॉलो करछि ना नहीं okay fine these are the key elements standards of auditing definitions रे standards टा important mark करेबे okay this can come in the exam काहेकि पिला ना डाबा मारी परियनी इंस्टीट्यूट रो गुटे बुद्धि अछि जोड़ा तमे डाबा मारी परियनी जोड़ा तमे लाइक निज आंसर लिखि परियनी सेमती क्वेश्चन से अधिक दबो okay these two people have given the exam जदि किछि भूल भाल अछि मते करेक्ट करि परिय रितेश एंड सुजल हला ऐड ऑन भी करि परिय Evaluation of auditing. It's for basic understanding, not so important for exam. Traditional era, industrial era and modern era. तो एथरे कौन होची the evaluation can be classified as follows. Traditionally से कौन होथिला detection and prevention of fraud, focusing on checking accuracy in financial records. Okay, एटा normally traditionally समस्ते भाबन. Industrial रे कौन होची compliance with company policies and accounting standards. माने industries रे we have different types of industries. We have manufacturing industries, we have service based industries, we have some multi scale industries जोड़ा कि बहुत प्रकार जिनस गुठरे इंटीग्रेट करिकि थाउची तो कहा को standards applicable and कहा को policies applicable whether they are actually following it or not सेडा से देखियो in the industrial era. modern era रे कोन होची internal control and risk management. internal control और risk management टा से माने कौन करिवे देखिबे so this is the actual thing carried out in digital era से कौन करियो internal control system टा first check करिवो कि कंपनी निज पय कौन control system establish करछ second thing होची risk management सब कंपनी रे किछि ना किछि रिस्क थिबो तो से रिस्क ता से डिटेक्ट केमति करछि आ सेटा को प्रिवेंट केमति करछि किनि मैनेज करछि तीनटा जे जिंस से ध्यान दबो and obviously the reliability of financial statements जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमको मिलुची ताकू धरि के हम असेसमेंट करछु मना नै बट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कोन रिलायबल अछि कि सेडा हमको देखिया पड़बो जदि से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आगा गुडे भूल भाल इंफॉर्मेशन वाला हेतिबो तो हाउ कैन वी प्रोड्यूस सम इंडिपेंडेंट ओपिनियन ऑन इट बुझि पाला ना तो रिलायबिलिटी ऑफ व्हाट ना रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ए सब जिंस होची का पे स्टेक होल्डर्स तो हाउ मेनी ऑफ यू नो द डिफरेंस बिटवीन स्टेक होल्डर्स एंड शेयर होल्डर्स stakeholders and shareholders stakeholders can be public general very good general public भी हे परिवे those who have some sort of ownership very good तो stakeholders रे आसुचन हमरा public creditors debtors government and every user of the company's information but shareholders they only the people who have invested in the shares of the company okay जो modern era रो audit होची that is not only for the shareholders purpose but for the stakeholders purpose एरा टिके मन रखिबो हला बिट क्वेश्चन पॉइंट है बरे डिजिटल era रे कोन होची देखा technology introduced data analytics and automated systems enabling real time auditing and focusing on cyber security sustainability and corporate governance तो तुमको ये जो जिंसडा अछि these are only for the bit questions purpose बुझि पालो तो से मॉडर्न एरा रे को जिंस ऊपर फोकस करछि डिजिटल एरा रे को जिंस ऊपर फोकस करछि जेहेतु 2 मार्क्स गुटे गुटे क्वेश्चन कोन कहला नहीं डिजिटल एरा जो बिट क्वेश्चंस हमरो 2 मार्क्स रो तो को एरा रे को जिंस ऊपर फोकस रहु सेटा मध्य हम देखिया पड़ो तो डिजिटल एरा रे से देखो साइबर सिक्योरिटी
sustainability and corporate governance. Cyber security होची major risk for the IT sector industries. तांको देखियो पड़ो कि किमती fraud से माने prevent करिवे आ से माने ओ किमती निजर fraud टा prevent हबो. Then sustainability माने market रे long term रे तारा कोन हबो. Okay, corporate governance माने what's corporate governance? कमान तम माने कहिबार अछि इंटरैक्टिव रहर अछि न तो सोई पड़े एज्यूम करिनु. What's corporate governance? Information समस्त पाखरे रहर अछि. Okay. तो corporate governance is when you are spreading something. माने गोटे कंपनी केमती मैनेज होची. What are the methods adopted to carry out the company? सब जिंस corporate governance रे आसीबो. तो डिजिटल एरा रे ऑडिटिंग ए तीनटा जिंस ऊपर फोकस करिवो. मॉडर्न एरा रे एजा ऊपर फोकस करिवो. इंडस्ट्रियल एरा रे कंपनी पॉलिसीज और स्टैंडर्ड्स ऊपर फोकस करिवो. ओके, किछि डाउट्स अछि कार एते जे बुझुची? हाँ ना नाइ ना कोन मते वीडियो पॉज कर लाले लाउच. फाइन. नेचर ऑफ ऑडिटिंग देखो. एग्जामिनेशन क्वेश्चन आसीची दी तीन थरे. ओके, तमने जेतळको स्कैनर टिके वेरीफाई लाइक क्रॉस वेरीफाई करिवो तो यू पीपल विल फाइंड मी रिलायबल और नॉट सेटा देखियार अछि. हला मोर रिलायबिलिटी भी चेक हेबार अछि ना. मत थोड़ी की ऑडिटर ऐसे चेक करे. ओके, तो नेचर ऑफ ऑडिटिंग देखो. सिस्टमैटिक प्रोसेस, independent examination, evidence based, standards compliance, assurance and opinion, broader scope. Okay, systematic process रे कौन होची? It follows a structured approach including planning, evidence collection, analysis and reporting. तो एजा करे कौन होबो? Structured approach रहयो. Not just that कि एजा सब फॉलो करियर अछि, बट का परे कोडा फॉलो करियर अछि सेडार मध्य तार गुटे अप्रोच रहबो. इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ऑडिट यू आर कैरिंग ऑन. ओके, मु बेसी इलाबोरेशन देबिनी, बाकी जेति की दरकार सेति की तो देबी. किछि जदि का अधिक जानियार अछि तो यू पीपल कैन क्लियरली आस्क. इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन रे कोन देखो दीडा कीवर्ड्स मु खाली कीवर्ड्स कहूची. अनबायस्ड एंड ऑब्जेक्टिव. अनबायस्ड एंड ऑब्जेक्टिव माने अनबायस्ड एंड टू द पॉइंट. ताको जदि गुटे ऑडिट दिया होची लाइक वी हैव फॉरेंसिक ऑडिटिंग हला पढिबो तमे ता बिषय. फॉरेंसिक ऑडिटिंग माने कोन ना जदि मनर गुटे कंपनी रे किछि फ्रॉड हैला गवर्नमेंट को सेटा जाना पड़ला तो सीए कोन कहिथा होची लाइक दे विल सेंड अ स्पेशल टीम फॉर दैट एंड दे विल बी ऑडिटिंग कि वी हैव डिफरेंट सेक्टर्स इन इट ताको पठा होची. तो तांकार ऑब्जेक्टिव कोन था होची ना टू डिटेक्ट वेदर द फ्रॉड इज एक्चुअली कैरिड आउट और नॉट. से फ्रॉड सतरे हेची, हु आर द पीपल इन्वॉल्वड, कोन हेची, केमती हेची, केते अमाउंट रो इंक्लूड हेची, केते अमाउंट रो इंक्लूड हेची सेडा से देखिबो. ओके, तो एथरे कोन हबो? से अनबायस्ड ओपिनियन दबर तो दबो, बाकी तार ऑब्जेक्टिव गुटे रहिला कि ए जिंस अछि ना नै प्रूव करियर अछि. ओके, whether it's actually carried out or not, कि fraud हेच ना नै ना खाली इंजाम लगे दी चंदी. तो to the point रहबो. Second thing is evidence based. Evidence based माने verifiable evidence. एडा होची कीवर्ड एडी. Verifiable evidence माने in the evidence जोडा कि जदि के चाहिले क्रॉस वेरीफाई करि परियो. मनर मु कहूची एडा एग्जाम क्वेश्चन, एडा बहुत इंपोर्टेंट हैला. एडा न पढले तमरो हबनी जदि मु कहूची. तो whatever I am saying is like मु गोटे एविडेंस तो देली, बाकी तमे सेडा वेरीफाई करि परियो ना नै? ऑब्वियसली करि परियो. यू हैव सम सोर्स टू क्रॉस वेरीफाई. तो वेरीफाएबल एविडेंस देखिबार अछि. देन ethos established principles like generally accepted auditing standards. ए जो जिनसर फुल फॉर्म पचारथिला, ए जो जिनसर फुल फॉर्म पचारथिला एग्जाम रे. ओके, व्हाट्स ISA एंड व्हाट्स GAAS. ओके, तो स्टैंडर्ड्स कंप्लायंस माने जोडी जो स्टैंडर्ड्स रो दरकार अछि से स्टैंडर्ड्स फॉलो हिच ना नै देखिबो. The purpose of auditing is to provide stakeholders with reasonable assurance, number 1, independent opinion about the reliability, number 2. Okay, reasonable assurance and reliability. Reasonable assurance माने कोन? तमाम जाहु जोड़ लाइला को भरोसा. ओके, हाँ ठीक अछि पूरा भरोसा. बट reasonable assurance माने कोन? Okay, it's backed up with proper reason. Fine.
तो रीजनेबल अश्योरेंस रो मेन माने एस्पेक्ट एडी कोन पे आछि ना इनदी किछि लोक अछन्दी जे कि ऑलरेडी इन्वेस्ट करछन्दी एंड इनदी किछि लोक अछन्दी जे कि इन्वेस्ट करिया को चाहछन्दी तो दिजन जाको कोन प्रॉपर्ली गोटे रीजन बेस्ड अश्योरेंस हमको दबाव पड़िबो दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव लाइक मेन वर्क ऑफ अ ऑडिटर एंड एडा होछि नेक्स्ट होछि रिलायबिलिटी तो मु कहिथिली ब्रॉडर स्कोप मॉडर्न ऑडिटिंग गोस बियॉन्ड फाइनेंशियल वेरिफिकेशन कवर्स रिस्क मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल एंड compliance एडा होची मॉडर्न एरा रो ऑडिटिंग ओके किछि डाउट्स अछि एथरे नो किछि डाउट्स नै माने दीडा जिंस हेई परियो कोडा भाबी मो none of the above कोन any of the above एडा देखुला बुझिला ना ओके देखा रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग तो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग इंटरडिपेंडेंट भाबुछु ना नॉट एट ऑल डिपेंडेंट इंटरडिपेंडेंट समवट तो अकाउंटिंग को ऑडिटिंग रो दरकार अछि ना ऑडिटिंग को अकाउंटिंग रो दरकार अछि ऑडिटिंग को अकाउंटिंग रो दरकार अछि तो अकाउंटिंग को ऑडिटिंग रो दरकार नहीं से कहियो नहीं सिर्फ मैं ही समझू तू नहीं समझेगा तुझे मेरी जरूरत नहीं है बहुत खराब भाबियो ना बुझी पाला ना नहीं तो ऑडिटिंग को ऑब्वियसली अकाउंटिंग रो दरकार निहाती अछि अकाउंटिंग को भी ऑडिटिंग रो दरकार अछि बिकॉज़ जदी ऑडिटिंग हैला नहीं कंपनी बंद हैला अकाउंटिंग होबनी ओके फाइन तो देखो purpose is accounting involves recording classifying and summarizing financial transactions to prepare financial statements केते थरे घुसी जो एडा मते लिख कहलो वो तो बहुत थरे घुसी because this is the first definition जो 10th standard रो कॉमर्स फील्ड को आसला परे प्लस 2 रे फर्स्ट डेफिनेशन इज व्हाट इज अकाउंटिंग तो पूरा माने ओवर एंथुसियास्टिक कामे थिबो ना तो एडा हम 10 15 थरे घुसतो ओके अकाउंटिंग व्हाट इज अकाउंटिंग देखला सेटा समस्त मन थियो काहे के समस्त घुसी ओके बट ऑडिटिंग इज verifying the accuracy and reliability of the financial statements prepared by the accountants तो एडी देखो मु कोन पे इमिति देछि ना तुमको वंस गुटे क्वेश्चन तमे आई थिंक मोस्ट ऑफ यू और ऑलमोस्ट ऑल केबे ना केबे तो एग्जामिनेशन रे क्वेश्चन पेपर तो देखिथिबो ऑडिटिंग रो कि कोन अभी कि यू मस्ट बी हैविंग एन आईडिया तमनो कथा मु कहनी ओके सेत्रे जो इंस्टीट्यूट अछि हमर इंस्टीट्यूट बहुत चालाक ब्रो ओके तो से डिफरेंस पचारिबा कि डिफरेंस पचारियो कि रिलेशनशिप पचारिबो तो से डायरेक्टली पचारिबोनी से एस्पेक्ट देथियो पर्पस हिसाब रे को सीक्वेंस हिसाब रे को नले हमें लिखिदा नहीं समर वेकेशन हैज समर हॉलिडेज विंटर वेकेशन हैज विंटर हॉलिडेज हमें लिखि दो ना तो इंस्टीट्यूट कौन कहउची दे विल बी आस्किंग यू द एस्पेक्ट कि ए एस्पेक्ट को धरे कि तमे डिफरेंशिएट करो तो दैट्स व्हाई मु ए फॉर्मेट रे देछि नाइ मो एग्जांपल कहउची मु ऑब्वियसली एटा तो डिफरेंस बिटवीन आ गहला ना मोर तोर डिफरेंस खारो हो आज्ञा देखन दो 5 मिनट देखियो तो पर्पस कोन आर पर्पस रहला रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग एथे रहला वेरीफाइंग द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंटिंग कम्स फर्स्ट देख लो as it provides the data and financial records for auditing but auditing examines and validates the records so it comes next तो ऑडिटिंग को देख खराब भाभी दो कहि से कहू नै नै तू आसु पर हला टेंशन नै ना देन फोकस अकाउंटिंग फोकस ऑन क्रिएटिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बट एडी कोन ऑडिट रिपोर्ट्स ओके डिसीजन मेकिंग रे कोन रोल थाउची न स्टेक होल्डर रो कॉन्फिडेंस टा एनहांस करियो बट ऑडिटिंग independent evaluation of these records okay मु दीरा जिंस लिख देछि बथेडी ना सेम करछ ओके हां अकाउंटिंग रा डिसीजन मेकिंग पाई एंड ऑडिटिंग दा स्टेक होल्डर कॉन्फिडेंस एनहांस करे ओके
किछि डाउट्स अछि एथरे? नो, वी आर गोइंग स्लो. ओके, एबे देखो स्कोप ऑफ ऑडिटिंग. तो स्कोप ऑफ ऑडिटिंग के डिफाइन करछि, एटार गोटे क्वेश्चन थिला. एबे आस्थिला ना ए क्वेश्चन ना आगो अटेम्प्ट रथिला? एबे आस्थिला एटा काओ मन अछि? हमें एग्जाम दे आसला पर हमें ना भूली छु. तमे क्वेश्चन कथा कहछ, हम तो भूलने की कोशिश कर रहे हैं. तंगन रे एक्सप्रेशन थल देख. The ICAI pronouncements and terms of engagement are the scope of audit. माने ICAI जो अच्छी सी आगे गोटे scope of audit prescribe करि परिबो आ pronouncement भी दे परिबो. तो एथिरा आसी हमर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर कोन? pronouncement माने डिक्लेरेशंस. मते बड़ खुशी लागला कि तो डाउट पचला कोन. ओके, देखो overall objectives of the auditor as per standards of auditing 200. This was an exam question. Okay, तो से standards of auditing 200 कहि कि पचरिबो तुमको. overall objectives पचरिबोनी केबे डायरेक्टली, not a BCom question. While auditing the financial statements, the auditor has following objectives: to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free from material misstatements. एतरे बहुत keywords आसीबो, तुमको इनदी हैशटैग करिगिरी यू हैव टू राइट, नले मीनिंग बुझी परिबोनी, मन रखी परिबोनी. ओके, तो एथरे से तीनटा जिंस कहिछ, तीनटा माने तीनटा. ओके, तीनटा का रहबो, ताडो अधिक रहबोनी, जस्ट बिकॉज़ से एसए 200 बिसरे पचाछ. जदि से 7 मार्क पे एटा पचारथियो, हां ऑब्वियसली तुम लागे कि 7 मार्क्स पे तीनटा लिखले से खराब भाबे, आमे टिके एक्स्ट्रा लिखि दो तो केबे से भूल करिवोन. बिकॉज़ वंस जदि से कहि देछि इमिति, तो स्टैंडर्ड जेति की कहिछि सेतिया तमे कहियो, से खराब भाबले भाबो हला, बेसी लिखले पूरा मार्क काटि दो. ओके, सेडा मन रखबो. सो दैट्स द पर्पस बिहाइंड इलैबोरेटिंग दिस. फर्स्ट होची obtaining reasonable assurance. reasonable assurance रो मीनिंग हमें जान लो, whether the financial statements are free from material misstatements. तो material misstatements word टा तमे बहुत जगह रे देखिबो, material misstatements. So what are misstatements actually? Anyone? Misstatements माने कौन? Statements रो, when statement is not married it's called misstatements. कौन? Yeah, exactly. The mistakes, whenever there are mistakes in the statements, they are called misstatements. So एडी material concept कौन पे आसिला देखो. material material माने होची important. किछि गोटे ऑर्गेनाइजेशन अछि, ओके, सेथिरे से 10 रुपीस 100 रुपीस जगह से 10 रुपीस रे अमाउंट कोडी किछि पके दिछ. तो दिस इज नॉट अ material misstatement. बट जदि 10,000 पकेज, एडी भी वन गुट्टा का सुनना, एडी भी गुट्टा का सुनना, कौन डिफरेंस, क्या फर्क पड़ता है? बुझी पाला तो दिस इज अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. कौन 90 डा डिफरेंस? हाँ, नॉट मटेरियल फॉर द कंपनी, राइट. जदि क्रोर्स अच्छी, क्रोर्स ऑफ टर्नओवर अच्छी, से कोन 10 टाका पे झगड़ा लागियो, ऑडिटर कहयो हो देखा आज्ञा मटेरियल सेटा म आसुची. मटेरियल माने इंपोर्टेंट फॉर अ कंपनी, व्हाट्स एक्चुअली इंपोर्टेंट फॉर अ कंपनी. तो ऑडिटर फर्स्ट टाइम आसिला, देखिला 10 टा पके दीची से 100 टा जगह रे, किछि कहलानी पळेला, तो सिए मते खुशी है लगी, हां से गुट्टा सुनो इग्नोर कर देला. सेकंड टाइम जतो आसिला गुट्टा का सुनो, एथरे ऑडिटर गाड़ी करला बहुत जोर, तो से क्लाइंट कहला तुम बदल गए हला, तब भी एक ही जीरो था, अब भी एक ही जीरो है. यू आर नॉट हु यू आर से कहियो, हार्ड में जाली कहियो, ऑडिट रिपोर्टर कौन पकियो, इट्स अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. ओके, व्हाट इज एक्चुअली अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट? now what is actually important for that particular company है ना. ही पारे 100 की 1000 crores of company पे एडा मध्य मटेरियल ना ही पारे, बट जो सानो कंपनी पे दिस इज एक्चुअली मटेरियल.
जे ताको thousands of मैं 1000 crores रो turnover अच्छी तो they are not so like idle कि ए जिनसोडा तांके consider करिवे. Okay, so material misstatement माने what is material for this company may not be material for the other company. Accounting रे अछि ना materiality concept ता the same thing applies here. Okay, एडा रहला material misstatement. To express an opinion on whether financial statements are prepared as per applicable FRF. What is FRF? କହିଥିଲି ଏବେ अब free from कुछ भी कौन ना एग्जाम देचा व्हाट्स FRF आमे MRF जानছো FRF जाननो प्लीज इट्स हाँ फाइनेंशियल आवासनी रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ओके तो से कौन करिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टा एक्चुअली जो प्रिपेयर हिची सेटा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क माने से किछि गोटे ये देथे माने प्रोजेक्ट वर्क तुम ठीक करछ रे बाकी से यात्रा काम जा करनाली कले से मार्क दबनी काहे तार रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क सेडा कि तमे इमिति एका करिवो ए फॉर्मेट रे करियो ब्लैक रे हेडिंग ब्लू रे राइटिंग तो दैट इज हिज रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क तो सेमिति ऑडिटिंग अकाउंटिंग रो मध्ये किछि रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क to report on financial statements and communicate as per the standards of auditing. SA माने standards of auditing. आज्ञा? Standard on auditing or outside? Off auditing. Put on लिखो. Fine. हो ज्योति इधर तार भूले थे नरे मन भूले तो ओके फाइन सो हमें पढ़लो स्कोप ऑफ ऑडिटिंग पर्यंत आई होप यू गाइस अंडरस्टूड जदि एते जे किछि डाउट अछि पछरो बिकॉज़ एथिरो बहुत इंपोर्टेंट पोर्शन हमरा स्टार्ट हबो बहुत लाइक एटा 10 मार्क्स क्वेश्चन भी आसीछि हमरो ओके आगे अच्छा देखो एथे किछि डाउट्स अछि एले सूरज प्रवीण इमोश अच्युत प्रेम पीयूष सिद्धार्थ देवानंद आउ बाकी जाना जति की अच्छा कोन डाउट अछि एफआरएफ होछि एमआरएफ रो भाई एफआरएफ होछि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ओके ए financial reporting framework माने we have financial information आमे ताको रिपोर्ट करियर अछि to the concerned authority तो concerned authority जेतलो दोछु तो कोन रफ पेपर टा मझी पेपर चिरी लिखि दे दो नहीं obviously not we have some framework कि ए फॉर्मेट रे पठियर अछि मेल करियर अछि सर्टेन कॉपीज हमको अटेस्ट भी करिया पड़िबो दरकार हिसाब रे बुझि पालो ना नहीं तो ए जगो धरी कोन आमे ताको रिपोर्ट करबा बुझि पालो ना नहीं तो से पर्टिकुलर कंपनी जोड़ा कि ऑडिटर ऑडिट करछि ता पे रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कोन अछि सेडा तमे देखिबो देखि कि ता हिसाब रे कोन करबो रिपोर्ट कर दैट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रिस्क्राइब्ड अछि बट दैट डिपेंड्स ऑन द कंपनी यू आर ऑडिटिंग गुटे गुटे ईच इंडिविजुअल टाइप ऑफ कंपनी पे देयर इज अ सेपरेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बुझि पालो आगे नहीं नहीं सब जतो मो किछ नहीं सीमा राज भाई साहब गुट्टा पेपर बट सेडा पे ग्राउंड वर्क तमो 7-8टा पेपर करियो पड़ियो तो जो गुट्टा पेपर जो दुसनी you have a lot of internal systems involved in it तो एते भी खुशी है जो नहीं गुट्टा पेपर that's different ठीक अछि किछ डाउट अछि कारण any doubts no nothing okay thank you so much